Hello, apni चाहे से HornbillTV ला नागमीज एक्सप्रेस इंडिया और कनाडा ला डिप्लोमेटिक रिश्ता बिया होई थाकिया दे कनाडा ला प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ब्रा और भी इंडिया ला खिलाफ कुथा कुरिगिना कुइसे कि इंडिया ला सरकार वा दुईटा कंट्री दे थाका मानु बिशी लगा जीवन दिगदार कुरी देस ताई तो कुथा कैनेडियन ला 41 डिप्लोमैट्स इंडिया ब्रा हटी जा पिछते क्वास ट्रूडो और कुइसे कनाडा ला डिप्लोमैट्स कुन बागे हटाई दिया इंडियन मानु खान कनाडा दे पूरी थाका खान लोगो दिगदार आइबो Canada de 5% population the Indian manu ase aru tate study permit loi gina thaka manu khan laga majot te 40% to Indian manu ase United States la President Joe Biden bra Congress ke $105 billion mangi ase Ukraine aru Israel ge madad kurubole nimte tai tu request tai laga Oval Office pra nation ge address kuria homoy koise और इतु अमेरिका ला इतिहास से चेंज हुआ टाइम एकता से कुछ तय कुछ इतु मदद दिया ब्रा रशिया ला इन्वेजन और हमास ला अटैक ब्रा बिया कुरी दिया देके भाल कुरिया मदद दिबो सिविलियंस खान के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दीना स्पीकर प्रो टेम पैट्रिक मैकहेनरी के यूएस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट डायरेक्टर शलांडा यंग ब्रा चिट्ठी एकता दे इतु फंडिंग लगा लिखी गिना दिया दे कुछ इजराइल निमिदे $14.3 billion और यूक्रेन निमिदे $61.4 billion लोदे ताइवान और इंडो पैसिफिक रीजन करने $7.4 billion और यूएस मेक्सिको बॉर्डर निमिदे $13.6 billion भी मांगीनास I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners including Israel and Ukraine is a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Help us keep American troops out of harm's way. Help us build a world that is safer, more peaceful, more prosperous for our children and grandchildren. Aji Nagaland la 15 districts te aspirants ka Nagaland staff selection la board exam diya se 200 upor group C post kane. Hornbill TV bra aji Chumugidma St. Joseph University te jaise aspirants khan kinega exam dise itu hudi bole. Avi details abo reporter Kekar Senu ke wo log rahe. HornbillTV ite St. Joseph University Chumugidi made ahigene ase aru manu bishi bi jani thagibo hole bi aji Nagaland staff selection board laga exam ase aru itu jwa sal 2022 pra first exam thagishe aru itu sal 2023 laga sal laga exam ase aru yere post to around 200 upor post karne manu in terms of thousands exam dia ase Nagaland laga 15 districts te to itu nishna man yere chumukiri made holibi St. Joseph University re students kan exam dia lare ahi gene ase one students kan itia yere exam khotom hoine ulahan ke tai khan kinika prepare kuri gene ahi gene appear kurishe aru ta na expectations hisab te holibi exam kan diwo parishna nai itu bi hudibo jwa salvi Hornbill TV itu applicants kan gibi kotha kurishe aru itu salvi mohan tahan gibi kotha kuri gene tan kinika exam dishe aru tahan NSSB laga exam laga opor ta na bhapna ki ase itu kan holibi mohan hudibo hopefully tan bi camera de holibi kotha kuribo how did you prepare for your exam NSSB not so well, but I think this year question was a little bit tougher than last year. oh really Yeah. so which post did you apply for this time LD. LDA Yeah. all right so what do you say do you think you know in a state like Nagaland, we hear a lot about exams being unfair and all. Do you think NSSB will be fair, the exams which a lot of youths are appearing? I hope they won't do any on such ground. I hope it will be fairful. Maybe last year it was fair enough to like all the posters was fairly given. I hope this year it will be the same as that. Okay, all right. So what do you think? Do you think you'll get through this time? I hope the cutoff will be a little bit low because the question was a little bit tough. So just hoping for the best. All right. Thank you so much for speaking to us. You are the first person we have interviewed. Hi, can we speak to you? How was your exam? How was your exam? It was like okay only, Okay. and not so hard also. Okay. I like that.
Yeah. So comparing to last year's questions, one of our friends said that it was tougher. So do you think it was a little tougher than compared to last year if you have appeared? For me personally, it was like the general knowledge part and all. It was a bit hard, but since I'm from a science background, so the science and like maths portion was not so tough like that. What do you think comparing to the other exams? Do you think NSSB will be fair? Yeah, I wish that it would be fair. Only like these days, like I feel like NBC is more fair and going well. So NSSP also like will do up to that only, up to what we are expecting. Yeah. Okay, so one last question. See, you are saying that NPSC is fair now, and you are hoping that NSSB will also be fair. So, what do you think is the leading force that is, seeing transparency when it comes to the government exams? What do you think is the leading force? Right now, like our student union and all, I feel like they are taking a great initiative and all that, doing all these and things. So I think they are the driving force. Okay, all right. Thank you so much for speaking to us. Thank you. আচ্ছা মান ইতিয়া প্ৰা দুইজনগে কথা কৰিছে কৈ দিয়া নিচিনা তাইজন বি ইটো একজন কাৰণে তো লাষ্ট ইয়েৰ লগা কুৱেশ্যনছ প্ৰায় ইটো চাল কম্পেয়াৰ কৰিলে অলপ টাফ আছে কৈছে আৰু তাইলা একটা ইচ্ছা আশা একটা হইলে তো দিছ ইয়েৰ কাট অফ তো অলপ কমতি হোৱালা ইনে একটা আৰু ইটো চাল একজন পৰা ষ্টেট কৰা তো NPSC বি উইথ পাছিং ইয়েৰ্ছ ফেয়াৰ হৈ যা আছে আৰু হোপফুলি NSSB বি ফেয়াৰ হৈ যাব কৈ কিনে তাই একটা উইচ কৰা লাবি মান দেখি পাছে মান এতিয়া এৰে আৰু ষ্টুডেণ্টছ খান বেছি বি ওলা আছে হলি বি মানুহ বেছি বি ইটো মহানগে কথা কৰলে অলপ কেমেৰা চাই হৈ যা লাইক তা দেখি আছে বাট উইল ষ্টিল ট্ৰাই হাই সিস হাউ ওয়াজ ইউৰ এক্সাম It was fine. It was fine. Yeah. Acha, so comparing to last year's questions, how was this year's question? This was is- it easier or tougher? This was my first time. Okay, sorry. So how was your first experience sitting for the NSSB exam? I was quite nervous at first, but yeah, Do you think you'll make it through? I can't say now. But Thank you for speaking to us. So, itu thagishe Hornbill TV aji yare NSSB appear kura khan ke ahi gine interview kura. Tan ekta kuma manu bishi bakto iniga exam digine ula hando iman khushi pra ula and then bishi confidently bhal dishe ko ase. Kuma manu to koi dia nishna aru bi itia bi effort diwo lage ko ase aro questions khan no kobo koile basic ase. Holi bi tahan itia bi bishi prepare kuribo lage ala bi janai dishe. ইটো আছে হৰ্ণবিল টিভি ইটো নিচিনা আপনি খান কে ইণ্টাৰভিউজ খান আৰু ইউথছ খান কে হলিবি ইনা ইণ্টাৰভিউ কৰালা হলিবি আপডেটছ আনি থাকিব এতিয়া কাৰণে ইমান হ'ব মই ৰিপৰ্টাৰ কে খ্ৰীষ্টিয়ান কে হোৱা উইথ কেমেৰা পাৰ্চন ৱং ফৰ হৰ্ণবিল টিভি চুমুকিদিমা Assam Sarkar bra Friday din National Liberation Front of Bodoland la former members khange 2 lakhs bhag korise. National Liberation Front of Bodoland khan do Hatyar Khan July 2021 de chhari dise. Itu puisa bhag kura do Bodoland Territorial Council la CEM Bodoland Territorial Region Assam Pramod Bodo bra Madhav Deb International Auditorium Panjabari Guwahati de bra diase. Assam Chief Minister Sarma bra taila ex account de likhise ki ityado Bodoland Territorial Region de pura shanti ase aru members kan nutun rasta chuna de welcome kuri ase. See, today, not only me, with the people of BTR and Assam, all are very happy and comfortable because our Honorable Chief Minister, since he led the state, he has taken lots of decision. One of the most important decision he has taken is a visionary decision that Assam should be violence-free. Assam should be free from any kind of illegal, weapon practice. So this is one big step from, our Honorable Chief Minister. So we welcome and we are working with this agenda. Now our Department of Home and Political, our Police Department, all are working very actively, and we can see the visible sense. With this agenda, in 2020, there was a accord, third time accord for the, the Bodo organizations, BTR accord. After that, you can see a visible sense. There is no any kind of violence in entire Assam.
lots of underground organizations were there. Several organizations were there with the Adivasi groups. So they have also come mainstream. Now one council is formed for them. And the hill district, there is no more violence. In entire Assam, you cannot see any, you can't see any kind of violence in these days. So these are the big achievements. And I'm sure that after becoming peace, the progress of Assam will be in a very high speed. And our, the vision of our Chief Minister is to, take the Assam to new height. It's among the 5 top states of the country. Definitely. हाँ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि उस एकॉर्ड होना बहुत कठिन था, क्योंकि कोई लोग म्यांमार में था, कोई बाहर था, कोई इधर था, उधर था, फ्रैक्शन बन गए थे, बहुत आपस में मिलता नहीं था. तो आईवी ने, होम मिनिस्ट्री ने, असम पुलिस ने, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने हमारे असम के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी अमित शाह जी उसमें मार्गदर्शन किया, प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन किया. उसके बाद जो है असम का अभी माहौल पूरा सब बदल गया है और छोटा छोटा 1-2 ग्रुप जो है वो भी अभी जैसे कि NLFB इसको भी अभी लाने में सफल हुआ. तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में असम वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल स्टेट भारत में होने जा रहा है. Heartening for all of us that in Assam after 1991 this is the first year in which there has been no civilian casualty and no security force personnel killed or kidnapping carried out by any militant or terrorist organization. As you are aware, things have improved substantially in Assam. Except for 4 districts now, Disturbed Areas Act and AFSPA has also been removed from the entire state. So we are definitely in a much better position. Our constant effort is to unearth all the illegal, illicit weapons in the state. Last 2 years, more than 1,000 weapons have been recovered in the entire state, of which more than half have been automatic weapons. So I am hopeful with the kind of work, hard work that has been put in by all the security agencies, including intelligence agencies and Assam Police, things would further improve. आज इतना ही कहेगा जे असम का चीफ मिनिस्टर माननीय हेमंत बिश्व शर्मा साहब और असम पुलिस विभाग से DGP GP सिंह सर और BTR का CM प्रमोद गुरु सर, उन लोगों इतना हमको अच्छा से यहाँ लेके आया हम वो. The Naga People's Front la President Kurigina A Dr. Shirozule Letsubra aji tailaga seat khali kurid kina apong ponganerge nutun party president kurubole announce kurise. Itula khobor do aji party la Foundation Day program Capital Cultural Hall Kohima de thaka homoy kuise. Outgoing President Letsubra nutun office bearers kun 2024-2028 la tenure bukhibule ase takhange oath administer kuri dise. নতুন প্রেসিডেন্ট রা কথা করিয়া সময় তাই লাগা খুশি জানাইছে আর লেজগে পার্টিলা পলিটিক্যাল লাগা জার্নি দো ভাল ব্রা লই কিনা আহা নিমিতে তাইগে ধন্যবাদ দিছে. আউটগোয়িং প্রেসিডেন্ট লেজ প্রা কইছে পার্টি ফর্ম করিয়া দো পারপাস থাকি কিনা ফর্ম করিছে আর ডেমোক্রেটিক প্রসেস প্রা নাগা মানুলা রাইট তো আপহোল্ড করিবলে করিছে. তাই কইছে NPF তো থাকিব আর ইন্ডো নাগা মামলা দে পলিটিক্যাল সলিউশন আনিবলে অ্যাক্টিভ ফ্যাসিলিটেটরস থাকিব. Kuzuluzo Nyanu, MLA and leader NPF LP Awangbo Nemai, Minister Manipur Aro, President NPF MSU Khanbi program de kotha kurise. General Convention de NPF pra resolution kunba adopt kurise. इतिया देश ते हिंदू खान लगा फेस्टिवल दुर्गा पूजा जाई थाकिया दे असम लगा नौगांव डिस्ट्रिक्ट ते पंडल और पहाड़ दे ₹11,64,000 ला वर्थ कॉइन ब्रा डेकोरेशन बनाई गिनास. खबर पा हिसाब ते कॉइन्स खान दो जो साल डोनेशन पा लगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लो दे ₹10 लाख पा प्रा बनाई से कुछ. सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. हम असम के नौगांव जिले के हैवर गांव में शनि मंदिर दुर्गा पूजा संघ के नाम से
माँ का दरबार सजाए हैं, माँ के आगमन की खुशहाली मना रहे हैं। और यह दरबार में हमने विशेष आकर्षण के रूप में कि खुचरे पैसे का जो हम बोलते हैं मुद्रा कॉइन्स का व्यवहारिक उपयोग किए हैं, कि 1,47,000 रुपये है, और जिसको देखने के लिए हमारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे पूजा मंडप में आएं और दुर्गोत्सव को सफल बनाएं। एवं पुनः एक बार आप सभी को दुर्गोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। India bra United Nations Security Council la debate te United Nations te reform lage koigina mangse. Debate te kota kora humoi India la permanent ambassador at the United Nations Ruchira Kamboj pra kuise dunia de problem thaka de United Nations pra solution anibule na para do United Nations Security Council do rendered ineffective ase koigina kuise. Ito karne United Nations te reform anibo lage crisis of credibility do hatabole koigina janaise. Mr. President, warm congratulations on your presidency. The basic premise underlying the theme of our discussion today is the erosion of trust in multilateral institutions and the need for reform. And it is indeed important for us to have an honest conversation on how to rebuild trust in multilateral institutions. Allow me to make 4 quick points as suggestions in this context. 1. The UN Charter calls for resolution of any dispute through negotiation. Where there are bilateral agreements on ways to resolve any pending dispute between parties, the best way forward would be for the international community to recognize the existence of such means and encourage the same. We have seen several examples in the past where bilateral discussions and regional and sub-regional mechanisms have been more effective in achieving mutually acceptable solutions to resolving disputes. 2. With their deep knowledge of local factors and complexities, regional and sub-regional organizations, particularly in Africa, are uniquely placed to find better solutions to conflict in their respective regions. We therefore support engagement between the United Nations and regional and sub-regional organizations in line with the United Nations Charter. 3. And in the context of peacekeeping, these forces need to be reconfigured to actively liaise with regional forces. It is equally important to build capacities and capabilities of potential regional partners as well as host states. We have done so on our part with several partners, especially in Africa. We also need to support African-led peace operations with resources and well-defined mandates that from their very inception also factor in exit strategies. And 4, none of this would matter if we did address the elephant in the room, that we are unable to peacefully resolve disputes through the United Nations because its core body, this very United Nations Security Council, has been rendered ineffective. Unless we undertake comprehensive reforms and get this House in order, we will continue to face a continuing crisis of credibility. The new orientation for reformed multilateralism, which we advocate, which India advocates, flows from the idea that there cannot be genuine solidarity without trust. An overwhelming majority of countries from the Global South, Mr. President, share our conviction that a reform of the UN architecture is no more a question of why, but rather when and how soon. The opportunity provided by the Summit of the Future next year should drive us towards change in the direction of a reformed multilateralism, including through the expansion of the Security Council in both categories of its membership. Finally, and regrettably, I am constrained to state that Pakistan has stooped once again to misuse the August Forum of the Security Council. Their observations are baseless and unfounded and therefore rejected in their entirety. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India as a result of Jammu and Kashmir's legal, complete and irrevocable accession to India in 1947. Thank you.
पुलिस कमेमोरेशन डे आज फेक्ते मनाइसे कोते डीसी एसपी और सिक्योरिटी एजेंसीज खान सब पार्टिसिपेट करेना मार्टियर्स खान के ट्रिब्यूट दिबले रीत राखी दिसे डीसी फेक कुको मेरो प्रा ताखान के इतु हमय ड्यूटी दे मुंदिगना कुरबी कुसे और मानु कुन जान दिसे ताखान के ट्रिब्यूट दिसे एसपी फेक प्रीतपाल कौरबा इतु दिन लगा ऊपर कोथा करिसे एएसपी डीएफ फेक बेंदांगब्रा मार्टियर्स खान लगा नाम पुरी दिसे इंडिया और न्यूजीलैंड ला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच कुंदुदो हिमाचल प्रदेश ला धर्मशाला स्टेडियम दे काली खिलबुले से लगा ऊपर कोथा कुरिगना इंडियन प्रीमियर लीग चेयरमैन अरुण धुमाल ब्रा कुसे इंडिया दो इतु मैच पिछदे टेबल लगा टॉप ते पुंजबुले से और न्यूजीलैंड दो नीचे गिरबो अरुण धुमाल ब्रा आरो कुसे धर्मशाला दे तीनता मैच तो ऑलरेडी खिलिगिना से होइलिबी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लगा मैच ही सबसे डांगर होबो इतुए नोइगना ता इंडिया ला बॉलिंग अटैक के भी प्रेस कुरिसे तो हमने पिछले एक साल से ही शुरू कर दी थी। अब 3 मैचेस का आयोजन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पर 22 तारीख को यहाँ पर सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। एक तो हिंदुस्तान की टीम खेल रही है और खेल भी उस टीम के साथ रही है जो इंडिया के साथ नंबर 1 पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। रन रेट में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 22 तारीख के बाद वो थोड़ी तब्दीली होगी, हिंदुस्तान ऊपर होगा और न्यूजीलैंड थोड़ा नीचे आएगा। देखिए हिंदुस्तानियों को तो डाइवर्सिटी की आदत है। अगर अभी चेन्नई जाएंगे तो वहाँ पसीना निकलेगा, यहाँ आएंगे तो यहाँ स्वेटर डालेंगे, अगर कलकत्ता जाएंगे तो मौसम और होगा, और गुजरात जाएंगे तो थोड़ा और होगा। तो ये तो हमारे लिए एडवांटेज होने चाहिए। दिक्कत तो उन्हें आनी चाहिए जो बाहर से आए हैं, जिनको मतलब डिफरेंस आए इसमें। लेकिन निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के लिए भी फेवरेबल ये चीज़ है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरीके का वेदर है और उनके लिए बड़ी लंबी विंडो है। वो उनका ये मैच भी यहाँ पे, इसके अगला मैच भी आए हो तो हफ्ता 9-8 दिन शायद यहीं रहने वाले हैं धर्मशाला में। मैं मानता हूँ इंजॉय भी करेंगे हिमाचल को, हिमाचल के वेदर को, थोड़ा रिलैक्स भी होंगे। लेकिन 22 वाले मैच में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जीतेगा। बुमराह से अच्छा फास्ट बॉलर मैंने तो अभी इस वर्ल्ड कप में तो कोई देखा नहीं। तो मैं मानता हूँ हमारा जो बॉलिंग अटैक है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से बुमराह की वापसी हुई है पोस्ट इंजरी, ही इज़ इवॉल्व एज अ बेटर बॉलर। आई थिंक जिस तरीके की बॉलिंग वो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बेहद ही शानदार है। सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं और शमी एक्सेप्शनल बॉलर हैं। हमारे स्पिनर भी, चाहे कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जब जब क्रूशियल समय आया उन्होंने विकेट्स लेके टीम को दी। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, लेकिन तब जब चाहिए थे विकेट उन्होंने लेके दी। वैसा ही बांग्लादेश के मैच में हुआ। मैं मानता हूँ हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इस समय चल रही है और पहले लग रहा था कि हमारी बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग थोड़ा वीक लिंक लगता था। जिस तरीके से एशिया कप में और यहाँ पर शानदार बॉलिंग हिंदुस्तान के गेंदबाज कर रहे हैं, मैं मानता हूँ हमारी गेंदबाजी इज़ एट अ अपर एज और उसका फ़ायदा हमें इस मैच में भी मिलेगा। तो ये तो था से बुलेटिन करने और अलग अलग खबर करने साथ एक भी हॉर्नबिल टीवी। गुड बाय।